Chef Ananya Banerjee and strawberry season is here. Let's make some jam-filled strawberry muffins. How does that sound? Yummy, no? Let's get started. Making strawberry muffins, I will need these few ingredients. Let's start the process. First thing first, some butter. 1 cup of butter and 1 cup of sugar. Butter and sugar has to be mixed very well. After the butter and sugar, next will come the eggs. I'm using 2 eggs for this recipe. After the egg, I will add some vanilla essence and that will be the end of my wet ingredients. इसको अच्छी तरह से mix कर लेना है. The wet ingredients are mixed very well. इसमें मैं डालूंगी और एक चीज़, क्योंकि strawberry season है. I love to use a lot of strawberries in every step. So strawberries को मैं pulp करके रखा है. This is strawberry pulp I am adding to the mixture. It will give a nice strawberry flavor to the muffins. तो मैं 3 चम्मच का strawberry pulp भी डाल दिया इसके अंदर. Next आएगा इसमें dry ingredients. Dry ingredients क्या है? Flour, that is मैदा, and baking powder. तो मैदा और बेकिंग पाउडर को मैं ये सीव के अंदर डालने वाली हूँ. अगर आपके पास ऐसे सीव नहीं है, यू कैन यूज अ नॉर्मल छन्नी और सीव. 1 cup of मैदा, I'll put inside this, and 1 teaspoon बेकिंग पाउडर. इसको छान लेना है. Feels like smoke. इसमें मैं डालती हूँ कुछ आधा कप मिल्क एंड आई हैव टू गिव देम अ गुड मिक्स. अभी ये जो मिक्सिंग है ये कट एंड फोल्ड मेथड में ही होगा. मतलब आप ऐसे फोल्ड करो और इसको कट करो. इन दिस मेथड इट इज सो दैट द केक बैटर विल नॉट लूज एनी एयर. फोल्ड 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 एंड कट. फोल्ड एंड कट. Fold and cut. Now the batter is completely ready, but I have to fill them in muffin cups. So I'm putting this in an icing bag so that it's easy to pour later on. Just snip off the icing bag tip and fill up the muffin cups. इसमें it is less messy and जल्दी हो जाएगा. I'm going to bake this at 180 degrees centigrade for 20 to 25 minutes till the muffins are golden brown and fully baked. It's slightly cooled down, just taking it out. I have taken some strawberry jam and put it in an icing